Hello to all divine souls. Welcome to today's live session. Okay, so today's topic is basically, can the mind heal the body? We'll be talking about that in today's session. And if I tell you in brief, yes, the mind can heal the body. To know more, stay till the end of today's session and आपको बहुत कुछ आज पता चलेगा. And that will help you create a beautiful belief that yes, you can heal your body. आप अपनी बॉडी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं by the healing of your mind. Kab, kaise, kahan, everything you will know in today's video. Well, before I begin, let me introduce myself. I am Manpreet Kaur, creator of the Mind Energizer Healing Method. I am a life and mindset transformation coach, as well as a women empowerment catalyst. So, there has always been a debate. एक हमेशा से debate रही है science के mind में, कि is it even possible that the mind can heal the body? Because we have always been thinking it is the medicines which are doing the work. But now science has also accepted the fact that yes, the mind heals the body. एंड उसने सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया इस फैक्ट को, इसको एक नाम भी दिया गया है जिसे कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट. ये प्लेसिबो क्या है? फॉर दोज हु डोंट नो, इट इज बेसिकली एक नॉन ट्रीटमेंट वे है जिसमें कोई ऐसी दवाई नहीं डाली जाती. देयर इज नो एज सच मेडिकेशन फॉर दैट प्रॉब्लम, एंड इट कुड बी अ शुगर पिल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. उसको देने से ही उस इंसान की हेल्थ ठीक हो जाती है. So this is what the placebo is about. And what I'll be telling you is a major breakthrough experiment which was done by Dr. Mosley. It was a surgery which he had performed, and it talks about the placebo in the most wonderful manner. तो आप इसको जरूर सुनिए इस पूरी experiment के बारे में. It can change your life forever. You'll be amazed. Now this is given in the New England Journal of Medicine as well, if you ever want to look it up. Now जो डॉक्टर थे, he was an orthopedic surgeon, and what he used to do, उन लोगों की सर्जरीज करते थे, नी सर्जरीज, जिनको बहुत ज्यादा पेन होती थी नीज में. नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, he took up two groups of people, एंड उन टू ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड करके एक ग्रुप को, ग्रुप वन को अगर हम कहें, उनकी एक्चुअल सर्जरी परफॉर्म की थी, नी सर्जरी. एंड जो सेकेंड ग्रुप था, उनकी उन्होंने शैम सर्जरी परफॉर्म की थी, यानी कि द प्लेसिबो. वहां पे उन लोगों को, उन पेशेंट्स को दिखाया गया कि आपके नी में इंसिजन्स डाले गए हैं, थ्री थ्री इंसिजन्स डाले गए थे, उसको सिला गया था. उनको वीडियो भी दिखाई गई थी कि आपकी ये हो रही है सर्जरी. नाउ द रिजल्ट्स आफ्टर दिस, द रियल एंड द शैम सर्जरी, क्या रिजल्ट्स आए? लेट मी टेल यू. वन थर्ड ऑफ द पीपल टोल्ड कि उनकी पेन रिजॉल्व हो चुकी है from the actual surgery. Now, when it came to group 2, the researchers were baffled. वो एक बारी हिल गए रिजल्ट्स देख के, क्योंकि वहां पे भी वन थर्ड ऑफ द पीपल, अगेन, उनकी भी पेन रिजॉल्व हो गई थी. और सिर्फ यही नहीं, बिना सर्जरी के जो लोग थे, जिनकी शैम सर्जरी की गई थी, दे in fact had lesser pain than the other group. It could be probably because they were saved from the trauma of the actual surgery. And in fact, one of the patients, after 2 years of the sham surgery, उनसे पूछा गया, तो what he said, that now my knee doesn't pain at all. In fact, मेरी दोनों knees एक बराबर हो चुकी हैं. Perfectly normal. So what does this experiment actually tell us? हमें क्या इस चीज से पता चल रहा है कि प्लेसिबो का फायदा है क्या? प्लेसिबो से what we are finding out is कि हमारा माइंड, जब उसे पता चलता है कि हमारी बॉडी को कुछ मेडिसिन, ड्रग जिसे कहते हैं, या फिर कोई सर्जरी दी जा रही है, तो वो ऑटोमेटिकली सिम्टम्स को रिलीव करने लग जाती है. एंड व्हाट हैपेंस इज इनर हीलिंग पावर्स आर रिलीज्ड. सो अगर हम देखें, अबाउट हाफ ऑफ द एस्थमेटिक पेशेंट्स,
अगर उनको एक फेक वो दिया जाता है इनहेलर और इवन अ शैम एक्यूपंचर, उनके सिम्टम्स सब रिलीज हो जाते हैं। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ द प्लेसिबो। नाउ व्हाट हैपेंस इज this placebo can be used by anyone and everyone under the controlled conditions. And this thing, even for the most logical people, because I know you may be logical, even I am very logical, we might feel that okay, it could be for those people who don't know too much about this, but I know about it, so it won't work on me. तो उस केस में भी ये रिसर्च पाई गई है that the people with the higher levels of IQ, in fact they are even more responsive to the placebos. That includes doctors and scientists as well. Can you imagine? And the main thing is, being a logical person myself, I used to question okay, sometimes what happens is when we pep ourselves up, when we motivate ourselves, sometimes we do feel the symptoms are relieved. Agar मैं बोलूं कि I'm feeling better, I'm feeling better, maybe my pain might subside, maybe I feel a little bit better. But does that mean कि मेरी mind मेरी body को heal कर रहा है? Well, then stay with me. I'll tell you one more amazing thing. Research has again shown that what happens, not only psychologically symptoms relieve होते हैं हमारी body के if our mind is releasing the healing, but physiological changes also take place. यानी कि हमारी body में भी difference दिखता है अगर हमारा mind हमारी healing कर रहा है। And आप बिलीव करेंगे, ऐसे ऐसे केसेस सामने आए रिसर्च के ड्यूरिंग जिसमें कि आफ्टर द प्लेसिबो bald men actually grew back their hair, cholesterol was lowered, BP was lowered, warts they disappeared, stomach acidity it decreased, and even the brain dopamine levels increased in people with Parkinson's disease. So we can safely say, after just I am telling you a few of the researches which have taken place, there are thousands and thousands of such researches. We can finally come to the point that there is a direct connection between the mind and the body, and the mind heals the body. It is self healing. इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूंगी कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, वहां जाके आप क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? इट्स ऑलवेज रिटन द डॉक्टर ओनली ड्रेसेस द वुंड बट गॉड हील्स इट। तो इससे हमें डायरेक्टली ये नहीं पता चल रहा कि इवन डॉक्टर्स हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दे आर ओनली डूइंग द सुपरफिशियल वर्क। Healing no one can do, only God can. Or that super consciousness, that deep consciousness of ours. That is what actually heals us. अब एक कमाल की बात है, जो हमारी डीपर कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो हमारी चेतना की गहराई में अगर हम जाते हैं, तो वहां पे माइंड एंड बॉडी आर ओनली वन, सेपरेट है ही नहीं वो। एंड यू नो व्हाट, Western medicine has separated both of them. That is where the problem is coming. We believe that the mind and body are not one, वो अलग हैं। तभी हमारे माइंड में कुछ ऐसे बिलीफ्स रहते हैं कि हम इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते या मुझे ये बीमारी हो गई है, एंड दैट इज वाई वो हीलिंग हम तक पहुंच नहीं पाती। अगर आपने कभी देखा हो, जब एक बच्चा पैदा होता है, अनलेस उसको कोई ऐसे कंजीनियल डिफेक्ट्स हैं, तो वो हमेशा हेल्दी पैदा होता है, बिकॉज हमारा नॉर्मल स्टेट हेल्दी ही है। दैट इज द वे वी आर मेड। कॉन्शियसनेस डज नॉट नो इल हेल्थ। उसे पता ही नहीं है बीमारी क्या होती है। ये हम बताते हैं, ये हमें सोसाइटी बताती है, ये हमारे आसपास वाले हमें बताते हैं। द मोमेंट वी गेट इंटेलेक्ट, we start separating our mind and body, and that is the point when diseases start coming into our body. And that is also the reason why healing doesn't reach us. चाहते हम सब ही हैं कि हम हील हों, पर हम क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज ऑफ दीज बिलीव्स जो हमारे माइंड में पड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं, कि आपको ये बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है, ये इस स्टेज की बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकती। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लेट मी टेल यू। सोल्यूशन एक ही है, that you reach the deeper levels of your consciousness
जहां पे there is unconditional love, and not only the word love. I don't mean just say love. I mean where you know from your core that there is no separatism. कोई चीज अलग नहीं है, ना मेरी माइंड ना बॉडी, वो सब एक ही है. उस पॉइंट पे आके आपके सारे ये जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं इन चीजों को लेके, वो सब डिसॉल्व हो जाते हैं. And that is where the healing powers of your mind are released. And that is when your body gets healed. Now, today's session, मेरा मकसद ही यही था, to help you all realize that you are born healers. आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है. Because you have that power inside of you. I'm just here to make you remember it again. I just want to energize you again that you have all the powers within you. Now, अभी तक तो ये सब learning की बातें हुई. And you always know that what I say, you're not learning if you're not transforming. Transformation comes only by applying what you have learned. And how can you apply it? I know you must be thinking, I won't be able to do it on my own. Well, then there's good news for you. And what is that good news? I'll tell you. As I told you, I'm the creator of the Mind Energizer Healing Method. And let me tell you briefly about this method. What is it exactly about? It is totally about the same fact that I have told you right now, that how to reach the deeper states of consciousness जहाँ पे सिर्फ unconditional love है, where the healing powers are released and we get a complete healing of our body. This is what I teach in this healing method. Now, since I am on a mission to help as many people I can, to spread this word, to help them know, especially in these testing times when there are so many viruses around in this world, we don't know how to shield ourselves. हमें ये नहीं पता हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, हम अपनी लव्ड वंस की कैसे करें, हम अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की कैसे सुरक्षा करें. तो उसके लिए I am now teaching this exact method for free. Yes, you heard me right. What is the use of all this knowledge, of all this wisdom, if we are not sharing it with our mankind? This knowledge is of no use unless we share it. So I want you to also learn it. I want you to experience it, because I'll be coming out with a session soon in which I will be teaching you exactly how you can do this method, reach that level where the healing powers are released. I want you to learn it, and I want you to spread it along with other people as well, so that they can also heal themselves. So if you are ready to learn it, then along with this post is given a WhatsApp group link. Just join that link, and there you will get details for the next upcoming session. You have nothing to lose. You have a whole beautiful life to gain. Not only for yourself. ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम खुद सीखें. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसी नॉलेज दें जिससे they can work on their well-being, because nothing is more important than your health. As they say, health is wealth. So I'm hoping that today's session really created a belief in your mind that you are born a healer. Nobody can stop that. And secondly, you will be attending this session to actually learn how to heal yourself and your loved ones in the most simple manner, which I have created, the Mind Energizer Healing Method. So, till we meet for the next session in another few days, till then, I'll be wishing you health, wealth, and abundance in your life. Share this post as much as possible. Share it with your loved ones in FB, on WhatsApp, wherever you have the groups. Let's all come together. Let's all heal each other. And we can together heal the world one soul at a time. So that's all for today. Thank you for tuning in. Let me know in the comments, what did you learn? What was your best takeaway from today? And do join the WhatsApp group. Love and light from Manpreet Kaur.